Hello everyone, welcome to this short video on logical reasoning for MH-CET. If you're targeting MH-CET, then probably you are thinking how to go about solving the logical reasoning questions. Now, before I move on, let me quickly tell you that there is a lot of misunderstanding about logical reasoning in MH-CET. People generally think that it's MH-CET, so logical reasoning questions would be on the easier side. The reality is that that is not the case. Unless you prepare well for this test, it's very unlikely that under the time constraint that you have, you would be able to solve most of the questions. तो इस एग्जाम को आप हल्के में ना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. Now I'm going to talk about couple of important things that you should keep in mind while solving logical reasoning questions for MH-CET. Let's get started. The first category of questions that MH-CET asks almost every year is of course analogy. Now analogy questions look easy, ये दिखते आसान हैं, but it's not really that simple all the time. कभी कभी धोखा हो जाता है. So you have to be very careful while attempting these questions. It's well known that you have to find a relationship, but my suggestion is do read the given instructions carefully. For example, sometimes they might say which of the following does not follow the same relationship. तो धोखा ना हो जाए, इस बात का ध्यान जरूर रख लेना. Now look at the question here. It says book is to chapter as city is to what? Now take 10-15 seconds, think of the correct answer. I think you would be able to figure out it. No problem. बहुत आसानी से question का आंसर मिल जाएगा ऐसा मुझे लगता है. But क्या मिला या नहीं ये आप खुद डिसाइड करना. You decide whether you got the correct answer or not. I will tell you the correct answer very quickly. Now the relation is book is to chapter. Chapter is something like a collection of pages, collection of words. बहुत सारी चीज़ों से मिलके एक चैप्टर बनता है. वर्ड्स होते हैं उसके अंदर वगैरह वगैरह, आइडियाज़ होते हैं और उनसे एक किताब या बुक बनती है. सो अ चैप्टर बेसिकली अ बुक इज मेड अप ऑफ चैप्टर, और यू कैन से chapters make up a book and chapters are collection of ideas, words, etc. Now we have to find out कि कौन सी चीज़ों से एक सिटी बनी होती है. Now probably आपके दिमाग में आंसर आ रहा होगा, मुझे थोड़ा आइडिया. आई नो यू probably are thinking building could be a good answer, but we'll go one by one. देखते हैं स्ट्रीट. क्या स्ट्रीट से सिटीज़ बने होते हैं? नाउ स्ट्रीट्स आर देयर इन द सिटी, बट स्ट्रीट से शहर नहीं बनता. करेक्ट. In fact, streets are probably very less important in terms of making a city. तो ये तो आंसर नहीं होगा. You know that already, right? But क्या building आंसर हो सकता है? Building is a good choice, but think buildings are individual units. Buildings अकेले होते हैं और उनसे मिलके कोई एक चीज़ बनती है जिससे शहर बनता है. जैसे चैप्टर बहुत सारे आइडियाज़, वर्ड्स से बने होते हैं, उससे बुक बनती है. सिमिलरली बिल्डिंग्स से कुछ बनता है और उससे शहर बनता होगा. दैट इज द रिलेशन वी आर लुकिंग फॉर हियर. तो बिल्डिंग ओके चॉइस बट नॉट ग्रेट एक्चुअली. स्टेट तो बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज स्टेट इज बिगर देन अ सिटी, तो इसे हम एलिमिनेट कर देते हैं. समटाइम्स इट कैन बी इक्वल साइज, बट इसे एलिमिनेट कर सकते हैं. तो करेक्ट आंसर क्या बचा? द करेक्ट आंसर यस इज नेबरहुड. A number of the students who are attempting this question probably would think building correct answer है, but ऐसा नहीं है. Neighborhood which is made up of buildings से सिटी बनता है. जैसे चैप्टर से एक बुक बन के तैयार होती है. सो आई होप यू गॉट द बेसिक आइडिया हियर. ये क्वेश्चंस लगते आसान हैं बट इतने नहीं होते. लेट्स ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई विल वेट फॉर 10 सेकेंड्स. तो आप ज़रूर यहाँ पॉज करके देख सकते हो. 10 सेकेंड्स खुद से भी ले सकते हो. देख लेते हैं क्या है रिलेशन. डॉग इज टू केनाइन. केनाइन इज द फैमिली. केनाइन इज द वर्ड which talks about, is related to, is about the characteristics of a dog. Dog के qualities को जो word बताए उसे बोलते हैं canine. तो canine एक dog की quality वाला word है. इसी तरह से हमें एक quality वाला word चाहिए जो lion के लिए fit बैठे. Now some of you might think carnivore, but हमें एक word चाहिए which talks about the entire family. Carnivore does not really fit because carnivore can also fit for animals like let's say a crocodile. बट हमें तो मोर स्पेसिफिक वर्ड चाहिए यहाँ पे. सो जंगल, कार्निवोर, नॉट रियली. वाइल्ड कैट. नाउ वाइल्ड कैट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ अ डैश group of animals which is feline. Feline basically means cat like.
फेलाइन का मतलब होता है एनिमल्स हु बिलोंग टू द कैट फैमिली. लायन इज पार्ट ऑफ इट, कैट भी होता है उसके अंदर, वाइल्ड कैट भी आ जाता है, और अदर एनिमल्स लाइक चीता एंड इवन लेपर्ड्स आते हैं इसके अंदर. एंड देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज फेलाइन. सो यू हैव probably you can prepare words like canine, feline, vulpine etc etc. उसके अंदर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे. तो इन क्वेश्चंस को आप इतने आसानी से ना जाने दें. यू माइट थिंक दिस क्वेश्चंस आर इजी, बट ऐसा नहीं होता. बी केयरफुल. लॉजिकल रीजनिंग MH-CET कैन बी प्रॉब्लमेटिक. नाउ नेक्स्ट वन विच अगेन हैज़ बीन आस्क्ड ऑलमोस्ट एवरी सिंगल ईयर, वो है assumption and statements and assumption question. Now this question category again students take them for granted. वो कुछ भी अजीबोगरीब लॉजिक लगा के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बट क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, वो फंस जाते हैं. तो फिर क्या करें? लेट मी क्विकली टेल यू हाउ टू गो अबाउट डूइंग दीज क्वेश्चंस. इन क्वेश्चंस में छोटी सी बात याद रखना. जस्ट आस्क योरसेल्फ, जस्ट इमेजिन दैट इफ यू टेक दिस स्टेटमेंट एज फॉल्स, तो क्या इस स्टेटमेंट के सेहत पे कोई असर पड़ता है? इफ यू बिलीव दिस स्टेटमेंट टू बी फॉल्स, तो क्या ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है? सो लेट मी रिपीट. इफ यू इमेजिन दिस स्टेटमेंट टू बी फॉल्स, डज इट एनी वे अटैक दिस आर्ग्यूमेंट और कॉन्ट्राडिक्ट दिस आर्ग्यूमेंट? इफ इट डज, then the assumption is correct. So I'll repeat. If you're doing assumption questions, think like this. You are the author. If you think this statement is wrong, this statement is false, does it make this statement also false? If it does, then the assumption is correct. Otherwise, probably it is not. Now let's try it out. The manager announced that the company's profits have increased by 20% this quarter. 20% मुनाफा हो गया भाई. मैनेजर ने अनाउंस किया है. assumption, कंपनी वॉज फेसिंग फाइनेंशियल डिफिकल्टीज बिफोर दिस क्वार्टर. मैं इस स्टेटमेंट को फॉल्स मानूं या सच मानूं? मैं मान लेता हूं द कंपनी वॉज नॉट फेसिंग फाइनेंशियल डिफिकल्टीज बिफोर दिस क्वार्टर, या मैं मान भी लूँ इसे सच. डज इट रियली अफेक्ट दिस आर्ग्यूमेंट एट ऑल? नॉट रियली. तो ये assumption नहीं है. द मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन प्रॉफिट्स. मान लो मैं इसे सच मान लेता हूँ, मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल, या झूठ मान लेता हूँ, मैनेजर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल. डज इट मेक एनी डिफरेंस टू दिस स्टेटमेंट दैट मैनेजर अनाउंस्ड? कोई फर्क नहीं पड़ता. विच मीन्स बोथ assumptions आर रॉन्ग. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी फॉर टेली. आप इन क्वेश्चंस को अगर ऐसे करेंगे तो आपके लिए काफ़ी आसानी हो सकती है. लेट्स ट्राई अनदर वन. स्टेटमेंट, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट द एग्जाम विल बी पोस्टपोन्ड टू नेक्स्ट वीक. assumption 1, the students who are ready for the exam this week. Now अगर स्टेटमेंट को मैं सच मान लूँ या झूठ मान लेता हूँ, लेट मी अज्यूम द स्टेटमेंट इज सेइंग स्टूडेंट्स वर नॉट रेडी. स्टूडेंट्स वर नॉट रेडी फॉर द एग्जाम दिस वीक. इफ आई अज्यूम दिस टू बी ट्रू, डज इट मेक दिस आर्ग्यूमेंट फॉल्स? कोई फर्क नहीं पड़ता. स्टूडेंट्स तैयार है नहीं है, पोस्टपोनमेंट के साथ कोई भी लिंक इसका नहीं होता. If students are not ready becomes a basis for postponing an exam, then every exam will get postponed. I think you would agree, yes? The teacher is one who makes decisions about the exam schedule. Believe it as true or false. सच मानो झूठ मानो, टीचर डिसीजन लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है? इससे इस स्टेटमेंट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता. Does it become false? No. That means again both assumptions are not correct. So I hope you're getting some basic idea. Just ask yourself, if I take the assumption as false, will it really attack the main argument? मैं अगर assumption को झूठ मान लूँ तो क्या main argument पे कोई फर्क पड़ता है? अगर पड़ता है तो assumption शायद सही है. The doctor advised the patient to quit smoking. डॉक्टर ने बोला स्मोकिंग छोड़ दो. Assumption, the patient smokes. अब इसे मान लो झूठा. Let's assume it is not true. Patient does not smoke. अब सोचो. Now think guys. If the patient does not smoke, तो क्या डॉक्टर एडवाइस करेगा? Won't the doctor look very अजीब सा? Won't it look very weird if the doctor says don't smoke and the patient is not smoking? If the patient does not smoke, then the advice becomes wrong. That means this assumption is correct actually, that the patient smokes. हम मान सकते हैं कि patient smoke करता है. The doctor is a specialist. इसे कर लो doctor is not a specialist. अगर मान लो डॉक्टर स्पेशलिस्ट नहीं भी है, तो क्या उसे एडवाइस नहीं दे सकता कि आप स्मोकिंग छोड़ दो? दे सकता है ना.
सपोज द डॉक्टर इज अ जनरल फिजिशियन, वो भी कह सकता है। इवन इफ द डॉक्टर इज नॉट अ स्पेशलिस्ट इन ट्रीटिंग स्मोकिंग रिलेटेड इलनेस, तब भी दे सकता है। सपोज द डॉक्टर इज नॉट अ स्पेशलिस्ट, तो क्या ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है? क्या स्टेटमेंट के सेहत पे कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं पड़ता। दैट मीन्स द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन ए। दिस इज द वेरी वेरी शॉर्ट ट्रिक दैट वी यूज। नाउ रिमेंबर एवरीवन, एवरी क्वेश्चन इज डिफरेंट, तो ऐसा नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन में इससे मदद मिलेगी, बट 95% केसेस में मिल जाएगी, तो इसका इस्तेमाल जरूर करना। नाउ द थर्ड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस दैट ऑफ कोर्स वी एक्सपेक्ट अ लॉट एमएससी में हमेशा आते हैं, विच इज ऑफ कोर्स ऑड वन आउट। ऑड वन आउट, रिमेंबर गाइस, अगेन इट लुक्स लाइक अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन टाइप, बट ऐसा होता नहीं है। करने बैठोगे तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा, और कभी कभी तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता। तो कोशिश करते हैं। फाइंड एन ऑड वन आउट। ऑल राइट, लेट्स ट्राई। जेलीफिश, ऑक्टोपस, स्क्विड, स्नेल। आप आई एम प्रीटी श्योर बहुत आसानी से इसका आंसर दे सकते हो। जेलीफिश, ऑक्टोपस, स्क्विड सब के सब कहाँ मिलते हैं? समंदर में, पानी में। स्नेल जनरली कैन बी फाउंड इन फ्रेश वाटर, इट कैन ऑल्सो बी फाउंड इन सॉल्ट वाटर, तो ये कहीं भी मिल जाता है। ये तीनों तो आपको कहाँ मिलेंगे? सॉल्ट वाटर में ही मिलते हैं। स्नेल इज ऑड वन आउट। तो थोड़ा सा जीके इसके अंदर लगाना पड़ता है, थोड़ा सा ज्ञान आपको यूज करना पड़ेगा। यू हैव टू यूज योर बेसिक नॉलेज टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो गया स्नेल। नाउ लेट्स ट्राई वन मोर एंड देन विल सी। So let's look at this question. Find an odd one out. All right, let's see. Dolphin, whale, shark, gorilla. बहुत आसान है। I think अभी तक आंसर आ गया होगा। I think you may have thought कि correct answer तो बड़ा आसान है, gorilla. But no, that's not the correct answer. The correct answer is of course shark. Why? Because dolphin, whale and gorilla all are mammals, whereas shark is not. Now, you might say, ध्यान सुना मेरी बात, हो सकता है आपको लगे पर डॉल्फिन, व्हेल एंड शार्क तो पानी में रहते हैं, गोरिल्ला तो नहीं रहता। आई अग्री, ये भी एक तरीका है सोचने का। यस, दिस कैन बी अ वे ऑफ लुकिंग एट इट, बट एग्जाम्स लाइक MH-CET डोंट लुक एट इट फ्रॉम दैट एंगल। सो व्हाट इज द लर्निंग? द लर्निंग इज दैट whenever you are trying to solve odd one out questions, use the most basic characteristic. Basic characteristic means if questions are on animals, plants, etc., then always think of their basic characteristic first. सबसे पहले सोचो उनका basic characteristic क्या है and try to answer questions accordingly. For example, dolphin, whale, shark अगर मैं देखता हूँ तो ये पानी में मिलते हैं, पानी में पाए जाते हैं। They are of course water living creatures, but what is the most basic categorization? The basic categorization is that they all fall in the mammal category, dolphin, whale and gorilla, but shark does not, and therefore shark is the correct answer. ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। So make sure guys you keep on practicing a lot of questions. Don't take this exam very very lightly, because it is not that kind of an exam. It is a well fought exam, काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। Now if you have liked the session so far, if you liked the video, consider leaving your like for us. That makes us very happy. On BYJU'S exam prep we keep on doing a lot of videos for you free of cost, of course. So why not subscribe? Because when you do that and press the bell icon, you get messages whenever we put up new videos, which we do on regular basis. Share the word if possible, and we'll come back with more such videos. Thank you so much everyone for watching this.